डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। बेसिकली जब वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हम पढ़ रहे थे तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में हमने देखा था कि इसमें दो मास इस तरह से कुछ सिस्टम्स होते थे। आप ध्यान दीजिए, इस सिस्टम में कोई एक मास होता था जिसके ऊपर आप हार्मोनिकली फोर्स लगाते थे, फिर यहाँ पे एब्जॉर्बर लगाते थे एक दूसरे मास का m2 का, और इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होता था तो हमारी ये कोशिश होती थी कि जो हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो। अब ये जीरो कब होगा? जब इसका K2 और M2 कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट करें कि इस A1 का वैल्यू जीरो आ जाए। दैट मीन्स कि इसका वाइब्रेशन, जो हमारा हार्मोनिकली एक्साइटेड सिस्टम है, उसका वाइब्रेशन जीरो हो, भले ये कितना भी वाइब्रेट करे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। आज हम लोग देखेंगे टॉर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के चार बच्चे हैं: टॉर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर, फ्रिक्शन डैम्पर, etc। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टॉर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ध्यान दीजिए, एज इन द केस ऑफ रेक्टिलिनियर वाइब्रेशन, this torsional vibration absorber can be used to reduce the completely or eliminate torsional oscillation of a system. This is the angular velocity, and so the shaft will rotate with t sin omega t. Suppose this is the disc 1, this is disc 2, this is the vibration absorber, this is the main system, and torsional stiffness KT1, KT2, moment of inertia for this one is I1, this for I2. It can be seen, all the values are represented here. Consider the arrangement. We see that the harmonic torque T sin omega t is impressed on the disc. This T sin omega t is impressed on the disc. The natural frequency of the main system will be given as omega n equal to KT1 upon I1. When this natural frequency of the system coincides with the impressed torque frequency, resonance occurs and the system needs some correction. One of the method is to change the stiffness of shaft KT1 or the inertia of disc 1 to change the natural frequency of the system. If the above method is somehow not possible, because it is not possible everywhere to change the inertia of disc and torsional stiffness of this shaft, it is not always possible. So we will need to think some other methods. In this case, vibration absorber are used of the torsional vibration absorber of torsional stiffness KT2 and disc I2 is attached to absorb the impressed torque so that the disc 1 does not vibrate. क्योंकि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का मेन पर्पज़ यही है, ये एडिशनल फीचर लगाने का पर्पज़ यही है हमारा कि ये हमारा वाइब्रेट नहीं करे. द एब्जॉर्बर शुड बी ट्यून्ड टू द इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सच दैट ओमेगा n2 इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू k T2 upon I2 और J2, polar moment of inertia of the shaft. That means this is called tuned vibration absorber.
क्योंकि ट्यून्ड में दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो टोर्सनल का, टोर्सनल वाइब्रेशन ऑब्जर्वर, और दूसरा आएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मास सिस्टम हम लेते हैं, द ऑब्जर्वर शाफ्ट सिस्टम। दिस इज द ऑब्जर्वर, बेसिकली this is the system. Suppose this is the disk, see here, this is the disk that is rotating with t sin omega t। ये हमारा सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे डिस्क I2 विथ टोर्सनल स्टिफनेस K2, जस्ट यहाँ जो हमने सिस्टम दिखाया है इसी का यहाँ पे आपका व्यू है। दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द स्प्रिंग स्टिफनेस, this is the disk 1, this is the disk 2, external and internal. The observer shaft should be strong enough to carry the impressed torque applied to the observer disk। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि whatever be the shaft, wherever is the shaft, the observer, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, the observer shaft should be strong enough to carry the impressed torque, that means harmonically excited torque, impressed torque to the torque applied to the observer disk. Now see this, ideally any value of K2, any value of KT2 and I2 will meet the requirement as long as their ratio is equal to omega square. It will meet the requirement if its ratio omega square KT2 upon I2. A shaft to be added a system may require too much axial length, which may not be possible all the time. A number of devices are being used to replace the same, so that the shaft will not need to elongate. The ring torsional observer is one of the best example in this. This torsional observer consists of a ring attached to one of the disc, this one disc, and this is another disc of the original system. A mass is connected to this ring by means of a spring. If no vibration is present, the entire unit rotates at constant speed. When torsional vibration occur in the system, the mass tends to continue to rotate at constant speed. Mass tends to continue to rotate at constant speed, so that the springs are deflected. The springs will be deflected and it acts as an observer. When the springs are deflected due to vibration in the main system, there is a change in their potential energy, and thus they absorb the energy of vibration of the main system. Thus, the vibration of main system are reduced or completely eliminated. Thus, coil spring replace the length of extra shafting. That means there is no need to add extra shaft. From the additional figure, you can use this additional figure such as this one. This is the K, this is the single shaft example. Here one example, this is the another example. What we can do here, from this figure it can be seen that KT2 equal to 4 into KR square, where K is
KT2 अपन 4r², KT2 अपन 4r². This equation can be derived as follows. If there are 4 springs, if this is the 4 spring and all are in parallel, then their equivalent stiffness is sum of their individual stiffness. Equivalent stiffness will be equal to K plus K plus K plus K equal to 4K. The spring force on them, the spring force on them F equal to Ke into X equal to 4 into K into X equal to 4K equal to 4K into R theta. This will be 4K into R theta. Now just see where K is the spring stiffness, X is the rectilinear displacement, of equivalent system. Theta is the angular displacement of equivalent system with absorber. Now just see here, from this equation we can find torque on the absorber. Torque exerted on the absorber. इससे आपका क्या निकल सकता है, T2 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फोर्स इंटू आर. यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फोर्स की जगह पे 4K R थीटा हमने निकाला है. यहाँ पे देखिए 4K R थीटा इंटू आर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 4K R² इंटू थीटा. अब यहाँ से टॉर्क एग्जर्टेड, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क एग्जर्टेड पर यूनिट ट्विस्ट ऑन absorber will be KT2 equal to T2 upon theta equal to 4K R². The amplitude of vibration of the torsional absorber at the exciting frequency omega is given by this equation. Based on similar analysis after changing translational quantities into torsional quantities इन दी प्रीवियस इक्वेशन, जहाँ पे हमने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पढ़ाया था, तो यदि आपको याद हो तो A2 इक्वल टू माइनस F0 अपॉन K निकला था, K2 फॉर द मास M2. तो उसी तरह से यहाँ सेम इक्वेशन यहाँ पे आपका निकल रहा है, ध्यान दीजिए. तो यहाँ पे अब हम T इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस β2 इंटू KT2, वेयर T is the maximum applied torque. T is maximum applied torque and β2 is the amplitude of vibration. Amplitude of vibration of torsional एब्जॉर्बर. दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे जो मास M2 है वह तो वाइब्रेट हो रहा है,
but mass m1 is not going to further vibrate. Just see here, mass m2, that means disk 2 will vibrate but disk 1 will not vibrate. That is the basic application of torsional vibration absorber. Thank you very much. Keep watching the next video. Our next video just will be related to the vibration absorber, and that will be centrifugal pendulum absorber. Thanks for watching.